Hi everyone, myself Arav Gupta and I am the founder of Comparedly. I have Garvit with me who is handling the tech. So guys, आप लोगों ने ना हमें अभी तक रील्स में देखा होगा, बट मैं सॉर्ट ऑफ एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ. What we are doing is we are a price comparison platform. बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आप लोग क्विक कॉमर्स पे ऑर्डर करते टाइम जगल करते हो मल्टीपल एप्लीकेशंस पे कि यार ब्लिंकिट पे चेक कर लेता हूँ सस्ती मिल रही है, स्विगी इंस्टामार्ट पे चेक कर लेता हूँ, जेप्टो पे चेक कर लेता हूँ. वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इट. व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना है. यू हैव टू सर्च जस्ट मिल्क इट. यू विल गेट all the prices of milk at Zepto, at Blinkit, at Swiggy, Instamart with their respective timings, and you can order it directly. Coming back to the presentation here, we have a very straightforward mission and vision over here that we have to provide a seamless comparison of platform, not just with quick commerce, with everything. So yeah, see, what is quick commerce? Anything delivered at 10 minutes around your place. अब guys, what you are doing is कि आप लोग multiple applications में जाते हो. You juggle between them कि किस पर सस्ता मिल रहा है, किस पर क्या मिल रहा है. We are saying on the top of the voice that कि आप एक बार सर्च करो comparedly.co.in at your platforms and within 1/10 टाइम में आप लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो. आपका यार टाइम बच जाएगा. इवन आप जब मल्टीपल एप्लीकेशन पे जाओगे तो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन कि ब्लिंकिट पे क्या था, स्विगी इंस्टामार्ट पे क्या था. ये चीज स्प्रेड आउट हो जाएगी आपकी. इवन दो पीपल मिस आउट दीज थिंग्स की वो जगल नहीं करते, दे एंड अप ओवर पेइंग द थिंग्स. तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो यार हाउ वी आर सॉल्विंग दिस कि हमने तीनों ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट के सारे प्लेटफॉर्म्स के प्राइसेस फेच करके अपने एप्लीकेशन पे लगा रखे हैं. यू जस्ट नीड टू सर्च एनी ऑफ द आइटम व्हाटएवर यू नीड टू ऑर्डर और आप विद इन कपल ऑफ क्लिक सर्च कर सकते हो. Yeah, so this is a basic overview of our product, what we are building, our UI UX. Basically, this is the product, and this is how you can see कि it's 82 over Zepto and 88 over Blinkit. It's 6 rupees. बस 6 रुपए का इसमें अंतर है, not just one time. आप अगर महीने में 6 से 7 बार या 10 बार मंगाओगे मल्टीपल चीजें, तो आफ्टर आवर पायलट वी कंपेयर लाइक कि एक स्टूडेंट के 200 से 300 रुपए बच रहे हैं मंथली बेसिस. So these are some sort of our competitors. Let me just explain you in a brief what they are doing is that this is Savio. They have a very bad user-friendly UI UX. This is Shop Swiftly. इन्होंने ads लगा रखे हैं अपने platform पे and this is Cravio. Even I believe they have pivoted हमारे आने के बाद. So Garvit is handling the tech, so he will be telling कि Cravio क्या कर रहा है थोड़ा बहुत. Hi guys, Cravio से पहले I would like to explain what we are doing in the backend. In the backend, we are using Go because it is one of the fastest language, and recently Uber has also switched its backend to Go because of its concurrency. And how we handling things is when someone searches on a platform, we go to the web pages and we just analyze and apply machine learning techniques to map the different products. Let's just say someone searches Kurkure on the platform. But Kurkure might have different name on Instamart, might have different name on Blinkit and Zepto as well. So here we apply our machine learning techniques like classification, and we just cluster them together so that we get the map results of our products, and then we fetch their prices and display it. To improve this, now we are going to implement AI agents. AI agents through Anytime will help us develop things more faster and more efficiently. This will 10x our productivity and we will be able to ship things much more faster. I would like to. So guys, we did our first pilot we did our first closed pilot with around 100 to 200 people कि let's see कि क्या ये चल रहा है नहीं चल रहा, real based problem है नहीं है. We did our first pilot with the item comparison part, but we got to know multiple feedbacks. They told me कि आरव हम ना कभी भी क्विक कॉमर्स से सिंगल आइटम ऑर्डर नहीं करते. We often go for carts. We go for कि 3 से 4 चीजें मंगवा लेते हैं to escape delivery charges, to escape these sort of close charges. तो उसके लिए we are over here कि हम ना कार्ट्स को कंपेयर करने का आपको ऑप्शंस दे रहे हैं. डायरेक्टली व्हाट इज दैट इज आवर यूएसपी कि यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ कार्ट और आवर प्लेटफॉर्म और आप उस ओवरऑल कार्ट को कंपेयर कर पाओगे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो. So this is what it will gonna look like कि when we will be comparing the card, आपको straight forward मिल जाएंगे इन सबके prices वगैरह की कितने किस पे है.
Yeah, so this is what our GTM strategy look like when we'll be going in the market or with an open pilot. जब हम कार्ड के साथ जाएंगे तो we'll be going to have some sort of Instagram से करेंगे marketing and हम colleges वगैरह में जाएंगे because majorly हमारी जो ICP है वो college students है, those who are the people who try to save money while ordering, not just from this particular quick commerce. आप सबने कितनी बार देखा यार, अगर आप कभी GPU से दिल्ली जाओगे तो ऊबर के प्राइस कंपेयर करते हो, यू चेक कि ओला पे कितना आ रहा है, यू चेक रैपिडो इन ड्राइव पे कितना आ रहा है. व्हाट इफ अगर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे दूं, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप योर लोकेशन एंड यू विल गेट ऑल द प्राइसेस इन वन पर्टिकुलर वेब पेज. एक क्लिक में आपको सस्ता मिल जाएगा, फास्टेस्ट मिल जाएगा, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. So this is what we are doing, and we are doing a pilot with quick commerce right now because it's really straightforward thing and booming into the market. Yeah, this is very interesting page, guys. Just hear me for next 2 to 3 months. Total 2 to 3 minutes. Total Indian grocery market हमारे पास है $600 billion की. उसमें से हमारा टैम कितना है? $5 billion. This $5 billion is the number जिसमें लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. And from this 5 billion में से $4 billion लोग कंपेयर कर ऑर्डर करते हैं. This is what our SAM is, and our SOM is like कि we would like to tell you कि in the next 2 to 3 years we can easily target $400 million की market according to the penetration happening in quick commerce sector. So very straightforward business model, guys, and honestly saying right now we are not just going for the money, but we just thought all our team that once we reach up to 10 to 20,000 users on a monthly basis, we'll be going to deploy ads and we'll be trying to promote multiple stores at our particular platform. Coming to the end of the slide, yeah, some sort of my credibility has been, it's very early stage. So I've been a podcaster and entrepreneur from last 3 years, hosted 100 plus podcasts with venture capitalists, founders, made 2 Forbes, Shark Tank India, USA, Create Startup, even just reached 2 startups to 50,000 users itself. And my teammate Yuvraj, unfortunately, he is not here. He's at Bangalore. उसको सुबह ही जाना पड़ा. But yeah, he started coding at the age of 12. He created multiple platform featured top at Product Hunt itself. That's it here from my side. Thank you so much for hearing. We are open for questions.